Alaikum, sorry for the technical glitch. So I think we just continue. I think others will join. I don't want to hold you forever here because I know you guys are busy. We have Dr. Fauzia Kareemi and Dr. Sister Aliya here. Dr. Shibi is trying to join us as well. So there were lots of questions, but I know we can't answer all those questions right here. But a few of the questions in terms of once a person gets infected with this COVID-19 virus, people are asking, is it a lifelong disease they'll be carrying through, or just like any other influenza which they get infected with and then it goes away? So either Sister Dr. Fauzia or Sister Aliya would may be able to answer that. So what I think is that, I mean, so far people don't know if it's a lifelong disease or not, because the first time this infection is there, so we don't know yet what's going to happen in future. But like another viral infection, people are forming antibodies, okay? And then those antibodies last for some time. We do not know how long they're going to last. Influenza B actually is a recurring disease. People can get it every year. So it's not that किसी को एक दफा influenza हो गया तो दोबारा influenza नहीं होगा. And there's a vaccine for it to prevent it, which is, you know, because the thing is that with virus actually mutates, it changes. It's an RNA virus जो कि change होता है, उसके अंदर capacity है change होने की. तो possible है कि ये किसी को हुआ हो और infection, वो person जो है, they might not get infected very quickly, but actually still there are reports coming from China that there are some instances jahan pe people are getting second infection. A case series मैंने देखी थी जिसमें I think, I don't remember the number, but there were people who got actually this infection again. So as of now, that's what we know, and I'll leave it to Dr. Fauzia if she has to say something else. Ji, thank you so much. So basically, you're absolutely right. लेकिन जी जिनको it's a coronavirus, ठीक है, coronavirus पहले भी SARS हुआ था, but we haven't seen that people who got SARS did not get this. So unfortunately, because of the time span being so little, there are a lot of studies coming out which really haven't been tested. So ये studies तो होती रहेंगी. दूसरी चीज, आप लोग कुछ चीजें basic समझें कि flu vaccine हर साल आती है, right? फ्लू होता है, हर साल हम नई वैक्सीन लेके आते हैं, बिकॉज जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने कहा वो चेंज हो जाता है, म्यूटेट होता है. इट्स नॉट लाइक यू मे, सो द कॉन्सेप्ट राइट नाउ इज just because you got it doesn't mean you will never get it again, and we don't know how long the antibodies will last. But right now what's happening is, even in Calgary, we are actually getting plasma from people. Plasma hota hai blood ka derivative, blood mein se aap plasma निकालते हैं, और जिन लोगों को इन्फेक्शन हो कि वो रिकवर कर गए हैं, हमने उनको रिक्वेस्ट किया हुआ है कि प्लीज ब्लड बैंक पे आइए एंड गिव योर प्लाज्मा, ताकि उस प्लाज्मा से हम जो बहुत खुदा खास्ता बीमार लोग हो जाएंगे, वी आर होपिंग दैट वी कैन यूज दैट प्लाज्मा, दोज एंटीबॉडीज टू हेल्प हील दोज पीपल. सो दीज आर ऑल थिंग्स इन प्रोग्रेस. ऑब्वियसली जब हम कोई रिसर्च या कोई स्टडी करते हैं तो उसको बहुत साल या लगता है, बहुत अरसा लगता है और बहुत लंबी होती है. तो इस वक्त इतनी सारी स्टडीज निकल रही हैं, इसीलिए जस्ट टू गिव an answer another, जो आपने कहा था कि बहुत सारी के सांस लोग ये हो जाएगा, तो you have to be careful. There's so much coming out right now. You have to be very very careful कि आप हर चीज को बिलीव करें या ना करें, थोड़ा सोच समझ के कि ये जो सांस रुक जाएगी तो सांस ले सकता हूँ तो मुझे बीमारी नहीं है. That's absolutely not true. It's a total myth. Even if you can hold your breath, you may still have the COVID virus. So please don't take that as a positive. ठीक है, इसका मतलब है you have good breathing lungs, which is great. Hopefully that will mean that your immunity is good and you will do well. But as far as getting an infection and a reinfection, at this point, we are not 100% clear कि reinfection सबको बचा सकेगा या नहीं बचा सकेगा. एक दफा हो गया, लेकिन we are using the antibodies, we are using the plasma of people who have recovered as a mean of treatment, and we are trying to develop a vaccine hopefully in the next 6 months. Thank you so much. Is also, there has been also people talking about taking vitamin D
or exposing themselves to the sunlight, I think above 45 degrees. Is that a myth as well, or that does help somehow? Anyone can say anything on that? Vitamin D is definitely good for you. It's good for building immunity regardless. ठीक है, वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी, वायरस को कुछ नहीं करेगी. आपको वायरस देखें, कुछ लोगों को हो रहा है, कुछ को नहीं हो रहा, कुछ. सो ऑल वी आर ट्राइंग टू डू इज कि अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कीजिए. उसमें विटामिन सी है, विटामिन डी है, और मतलब अपना रेस्ट है. और सबसे इम्पोर्टेंट, आई थिंक वी हैवंट टच्ड ऑन इट, मे बी यू टच्ड इट इन द लास्ट वन, इज द स्ट्रेस of this virus which is pulling us all down. और जब हम mentally stress होंगे, हमारी immunity low होगी. So mental health is also a big part of boosting your immunity. As far as going out and exposing yourself to 45 degrees or what, इसका मतलब है कि फ्लोरिडा में फिर किसी को बीमारी ना हो, या गर्म इलाकों में ये वायरस ही ना हो, या हम सब जाके सन टैनिंग उसमें जाके huge UV lights ले लें. अगर ये possibility होती, तो I'm sure we would have started using that as a treatment or a way of preventing. So basically, let common sense prevail. Don't go outside and burn your skin and, God forbid, get skin cancer. Try to do the vitamin D, absolutely, 2,000 international units a day, good idea. Vitamin C, आप lemon लीजिए, आप शहद लीजिए. I mean, there are so many things जो आपको, I'm sure मौलाना साहब बेहतर बता सकेंगे. कलौंजी के बहुत सारी चीजें हमें पता है जो हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती हैं. उसमें उनको लीजिए. और इसी से मुतालिक जो आपने रोजे के बारे में कहा था, वो भी यही है कि आप अपनी इम्यूनिटी को अगर बरकरार रख सकते हैं तो जरूर कीजिए. दिस, बट यू हैव टू बी सेंसिबल. अब हर एक को अपनी स्ट्रेंथ, अपनी इंड्योरेंस खुद पता है. मेरे लिए किसी और को कहना कि भाई तुम रोजा ना रखो, मैं सिर्फ मेडिकली ये कह सकती हूँ उन लोगों को immune modulate. For example, somebody's got Crohn's and is on a medication which is a biologic. There are other things that can cause your immunity to be really, really low. Then we would suggest, please don't risk it at this point in time. But regardless, just because आप धूप में बैठेंगे तो वायरस खत्म नहीं होगा. Thank you. Dr. Shabih Sab, do you have to say anything about, as you said earlier, that we have to keep our kids away from the elderly? From the elderly, yes. Yeah, so if people are living in the same household, say, God forbid, one person is positive in COVID-19 and they're putting him in the basement, he or she, and at the same time to give him the moral support, how would you suggest that family should deal with that situation? I mean, of course, medically keeping all the precautions, like as last time, I think Dr. Sakina said, when we serve them food, we have to make sure, wash them and separate them. Other than that, do you guys suggest anything if somebody is dealing such situation, they are going through these situations? Yeah, maybe somebody else can answer that, but as far as I know that if you have a risk factor, we need to keep the best you can do probably in a household where it is impossible to, say, for example, somebody's grandparents are in the same household. So I would like to hear other opinions, but my thinking is going to be that if you maintain your social distance from them and not to go close and hug them or kiss them, and other will be that these people shouldn't expose themselves to the outside world. So they can, I mean, obviously they have to go out and go for walks and stuff like that. And I think mental health is as important as physical health. So maybe somebody else can talk about it. But what I have read and heard about it, that if somebody's COVID positive, just positive, they don't have to be just elderly or whatever. They have to live in a separate quarters altogether. They have to have separate bed, separate plates, separate eating arrangements, and separate towels, clothes, and washroom. So they need to have their own washroom. This is what I believe has been an informed practice. So there are two ways of looking at it and two different answers. One is if there is a person in the house who is actually COVID positive, and one is जिस शबीह साहब ने कहा जो कि फैमिली में आपके ग्रैंड पेरेंट्स, बच्चे, आप सब एक घर में रह रहे हैं. ठीक है, तो दो सेपरेट सिचुएशंस हैं.
एक सिचुएशन जिसमें सब ठीक ठाक हैं, किसी को बीमारी नहीं हुई है, उसको हम कहते हैं आपका इनर सर्कल, ठीक है। उनके साथ आप कोविड वायरस से पहले भी रह रहे थे और अब भी रह रहे हैं। So you keep that inner circle as your inner circle and don't extend it. तो और लोगों को उसमें घर आए और ये मत कीजिए। फर्ज करें आपके ग्रैंड पेरेंट्स, फर्ज करें मेरे वालिदैन मेरे साथ रह रहे हो, मेरे बच्चे हैं, अगर हमारा इनर 5 का सर्कल है तो वो 5 का ही सर्कल रहेगा। वी विल मेक श्योर कि और लोग मिलने घर नहीं आ रहे, वी विल प्रिवेंट दैट। सो इफ यू कैन कीप योर इनर सर्कल secluded, that's fine, उसमें आप मिल सकते हैं, फिर भी घर में सही, बिल्कुल सही है कि आप ज्यादा गले मत मिलें और इस तरह मत कीजिए, अपना डिस्टेंस रखिए घर के अंदर भी, लेकिन उसमें कोई हर्ज नहीं है मिलना जुलना उन 5 या 6 जो घर के फर्द हैं जो कि उस में पहले से मौजूद थे। दूसरा पार्ट ये आता है कि अगर उनमें से अब किसी को कोविड हो गया है, either they're suffering for it or they are asymptomatic but positive for COVID, right? So there are a lot of scenarios for this. उसमें ये है कि बिल्कुल सही है कि you do need to isolate them. They do need to be quarantined within the house. So उनका कमरा, उनका बाथरूम सब कुछ अलग होना चाहिए in an ideal world. I don't know हर एक के पास ये पॉसिबिलिटी है। ये देखिए ना, जो लोग 2 कमरों के अपार्टमेंट में रह रहे हैं वो ये नहीं कर सकते, ठीक है। जिन लोगों के पास 5 बेडरूम हाउस है और हर एक के लिए अलग बाथरूम है, इट्स पॉसिबल। तो जो आपके हालात है उसमें जो आप बेहतरीन काम कर सकते हैं वो कीजिए, और थोड़ा सा जिसमें आप कह रहे हैं आप जो कुछ बचा सकते हैं वो आप बचाइए, बाकी अल्लाह पे भी छोड़िए। वी विल डू द बेस्ट वी कैन, विच इज, ठीक है, आप उनको जितना आइसोलेट कर सकते हैं करिए, लेकिन अगर नहीं पॉसिबल उनको क्वारंटीन करना तो अपना सोशल डिस्टेंस रखिए 6 feet at all times. Try and keep the hand washing going all the time. Try and keep the use of their bed sheets, clothing separate. ये सब आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पास गुंजाइश है अलग बेडरूम बाथरूम की तो जरूर, if somebody has COVID, they need to be quarantined in that for at least a minimum of 2 weeks. If आजकल अब 3 weeks भी कह रहे हैं, so I would say anywhere from 2 to 3 weeks. Just to add, I think you made excellent points. I think one of the things that is come to my mind is that if the children, for example, they go out, I mean, they need to go out. They can't be in house. They're going to be very stressed out. But if they maintain their social distance outside and then come back in, I think this will protect. At least it won't expose, not protect, but it won't expose the elderly who are living with them. But if they go out and mix with other kids, play in the park, I think they could in turn put these elderly at risk too. Absolutely. So social distancing is paramount, regardless. बच्चों को पार्क में खिलाना तो पार्क्स तो वैसे ही बंद कर दिए गए हैं. We are not recommending anybody going out in big groups. ज्यादा आप 2 लोग अगर मिलके वॉक पे जा रहे हैं वो भी अपना डिस्टेंस रखिए, वॉकिंग का भी डिस्टेंस रखिए. बच्चों को लेके जा रहे हैं तो बाप बच्चा या माँ बच्चा जो भी कुछ है, just 2 or 3 of them can go and have a little game and come back, but not with other kids. There is no playtime with other kids. It's a big no-no. तो ये नहीं है कि आप just because आप घर के फर्द हैं तो आप जाके बाहर 6 लोगों से मिलके आएंगे. You will expose your elderly parents to it. So social isolation paramount. Number 1, social distancing paramount. Then comes the hand washing and not touching your face. So social distancing को हर हाल में आपने सबसे सरे फहरिस्त रखना है. Both really good answer. So just we'll take a 2-minute break. Not a break. I will just play this video here, so everybody will see how to wash our hands. Then we'll get back to the couple questions before we conclude. So can you guys see this? Ji, I can see it. Yes, we can. Yeah. Okay.
Thank you for the patience. So I know you guys are busy with your stuff right now. We will conclude in 5 minutes. But what I'll say is that I think that was good video, but we need to actually show people exactly how to wash their hands. And now it's a holiday, yes. Maybe on Monday or so, I'll see if I can go to the hospital and videotape. Yeah. And then you can put it on, because there are just simply putting your hand under water and soap. And I don't think this is an effective way, but people have to really see exactly how to wash your hands to be effective. And just the last point I just want to say that Maulana Hadi Hasan, I think did an excellent job of explaining. And I think we're getting close to Ramadan, if you call it. And I think coming from Maulana Sahib will be the really effective way of informing people, and I think to prohibit strictly any of the iftar parties. No, as Sister Fauzia already said, the Hussaini Association of Calgary has cancelled all its events, all the gatherings. There is only online streaming available, but there are 2 or 3 people to facilitate that programming for our community members. Going forward, what's the current situation? Of course, it doesn't look like that Ramadan will be the same as we have been practicing in the previous years. It will be completely different. And inshallah, as Maulana Syed Hadi said already, that as per Islamic teachings, we should not put anybody at risk. And he will, I would request Maulana Syed Hadi briefly, if you would like to say a few words. Yeah, just if you could please mention that I'm not talking about the iftar parties at the Hussaini, but at each other's house. Generally iftar party. Yeah. Can I just add a little something to that video we just showed the community? Because I think it's important to just answer a quick question in there. Ke garam pani ya thanda pani. So just understand that coronavirus is enclosed in a fat soluble cell. तो वो अगर आप गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं, साबुन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो उस फैट को उसको हटा देता है, इसलिए वो वायरस मर जाता है. So it is important, अगर गर्म पानी अवेलेबल है तो गर्म पानी से ही हाथ धोइए, और साबुन अवेलेबल है तो साबुन जरूर इस्तेमाल कीजिए. अगर नहीं है, मजबूरी है, अलग बात है. But I just wanted to make sure, because it said, doesn't matter. It actually does matter, because this is a virus which is fat soluble, and if you use a soap and hot water, you really kill it well and good. So do try to use I know your hands, things are going to be done, but you need to do that with hot soapy water for 20 seconds. That is the minimum. Thank you. रियाज भाई, अगर वक्त हो तो 2 बातें हम और भी अर्ज करना चाहते थे. पहली बात तो ये कि एक पॉइंट जो हमारे जहन में आ रहा है और जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं पूरी दुनिया में, खास तौर पर जो हम अपनी कम्युनिटी के देख रहे हैं, दूसरी कम्युनिटीज की सूरत हाल भी शायद ऐसी ही हो. आई थिंक पीपल आर गेटिंग कंज्यूम्ड बाय कोरोना वायरस इशू, और बहुत से लोग दे आर रियली ऑब्सेस्ड. वो हर 2 मिनट पे वर्डोमीटर को चेक करते हैं कि कितने लोग कहाँ पे इन्फेक्टेड हो गए, कितनी मौतें हो गई. आई थिंक इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि अगर आप हर वक्त 24 आवर्स इसी में उलझे रहेंगे, हर वक्त कोरोना वायरस से रिलेटेड न्यूज आप सुनते रहेंगे, टीवी चैनल्स को आप जितने टीवी चैनल्स हैं सबको खोलिए तो हर टीवी चैनल पे सिर्फ कोरोना वायरस की बात हो रही है, और आप वर्डोमीटर हर वक्त चेक करते रहेंगे, तो इसके जरिए से
साइकोलॉजिकली, मेंटली, हर एतबार से आप उसमें कंज्यूम्ड हो जाएंगे, एंड दिस इज नॉट ए हेल्थी ऑप्शन। इसलिए कि इसके जरिए से फिर जो हम पॉजिटिव थिंकिंग में रह के अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, जिस पर कुरान में बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, इवन बदतरीन गुनहगारों से भी अल्लाह ने कहा है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, नेवर एंटर नेगेटिव जोन, ऑलवेज रिमेन इन पॉजिटिव जोन, डोंट बिकम होपलेस। तो अगर इंसान उसी में हमेशा उलझा रहेगा और कंज्यूम होगा तो ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकली वो स्ट्रेस में चला जाएगा और मेंटली भी वो डिस्ट्रेस्ड होगा। इसकी कोई जरूरत नहीं। जितनी इंफॉर्मेशन हमको मिलना थी कोरोना वायरस के बारे में ऑलरेडी हमको मिल चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स मौजूद हैं, रिलायबल सोर्सेज मौजूद हैं, वहां पे जाके हम चेक कर सकते हैं और खामखा में हमें हर वक्त उसमें उलझना नहीं चाहिए। आई थिंक एक मरतबा सुबह में आप न्यूज देख लें 10 मिनट के लिए, एक मरतबा शाम में देख लें, 2 मरतबा इज सफिशिएंट टू keep you on the same page, to keep you updated. इससे ज्यादा न्यूज देखने की कोई जरूरत नहीं कोरोना वायरस से रिलेटेड। इसके जरिए से सिवाय साइकोलॉजिकल और मेंटल डिस्ट्रेस के और कुछ हासिल नहीं होगा। और दूसरी चीज जो हम अर्ज करना चाहेंगे कि ये जो कोरोना वायरस की सिचुएशन है, इसको हम एक अपॉर्चुनिटी में भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने नोट किए हैं 7 इंस्ट्रक्शंस फॉर पीपल हु आर स्टेइंग एट देयर होम। पहली चीज तो ये कि हमें अल्लाह अज़्ज़ा वजल से अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहिए। और वो हम किस तरह से कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा हम नमाजें पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा दुआएं पढ़ें, स्पेशली द प्रेयर्स सप्लिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय मुहम्मद एंड आले मुहम्मद अलैहिस्सलाम, उनमें हम रिफ्लेक्ट करें और अपने आप को इवेलुएट करें। और फिर उसके अलावा हम अल्लाह अज़्ज़ा वजल पे ट्रस्ट हम ज्यादा से ज्यादा रखें, घबराएं नहीं। अल्लाह ने खुद कुरान में वादे किए हैं कि वो अहले ईमान की मदद करेगा, उनको सपोर्ट करेगा। और कुरान करीम की ज्यादा तिलावत करें। और दूसरी चीज, लोगों के साथ हम अपने रिलेशनशिप को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, स्पेशली फैमिली मेंबर्स। इंसान जब आम दिनों में होता है तो जॉब और दूसरी मसरूफियात की वजह से वो उसमें कंज्यूम होता है, उसको टाइम कम मिलता है। फिलहाल हमारे पास वक्त है, हम फोन उठा के अपने रिलेटिव से रिकंसाइल कर सकते हैं जिनके साथ हमारा इख्तलाफ हो, या जिनके साथ हम कभी कभी बात करते थे उनके साथ ज्यादा बात कर सकते हैं। सिले रहम, इसके जरिए भी उम्र में इजाफा होता है और मुश्किलात का इजाला होता है। और हकीकत में पूरे दीन का खुलासा भी यही है, अल्लाह से राबिता और खल्क़ खुदा से शफकत और मोहब्बत। पूरे दीन का खुलासा इन्हीं 2 जुमलों में है। और तीसरी चीज जो हम कर सकते हैं वो दूसरों की माली इमदाद है। बहुत से लोग हैं कि जो इस सिचुएशन में लॉकडाउन की वजह से और भी दूसरे जॉबलेस होने की वजह से रियली स्ट्रगलिंग, तो चाहे वो यहाँ भी मौजूद हों कैलगरी में, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। हमें सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान में नहीं देखना चाहिए। अगर खुद हमारे आसपास में मुस्लिम नॉन मुस्लिम कोई भी हो, हमारे नेबर्स में जो नेबर्स के हुकूक हैं वो सबके लिए हैं। अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है तो हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए, फाइनेंशियली या इमोशनली, या जिस तरह भी पॉसिबल हो। और चौथी चीज जो हम यहाँ पे अर्ज करना चाहेंगे कि इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा के हम बच्चों की तालीम और तरबियत पे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। बहुत से बच्चे हैं जो मैथ में, इंग्लिश में और भी दूसरे सब्जेक्ट्स में स्ट्रगल करते हैं। तो जो माशाल्लाह पेरेंट्स घरों पे रहते हैं, पहले तो काम पे होते थे तो सारा वक्त इधर उधर गुजरता था, आते थे थके हुए होते थे, अभी घर पे है, फ्रेश है, बच्चों की हेल्प करें स्कूल एजुकेशन में। और इसी तरीके से दीनी एजुकेशन में भी जो लोग कुरान नहीं पढ़ना जानते, घर में जो कुरान पढ़ना जानता है वो उनको सिखा दे। और हम अच्छी किताबों की स्टडी कर सकते हैं, उनका मुताला कर सकते हैं। बहुत सी अच्छी किताबें मौजूद हैं जो चाहे वो दुनियावी एतबार से हो, चाहे दीनी एतबार से हो। दीनी एतबार से आई वुड रिकमेंड शहीद मुर्तज़ा मुताहरी की बुक्स, माशाल्लाह इंटरनेट पे वाइडली अवेलेबल है, उनको आप पढ़ सकते हैं। और बहुत से अच्छे शोज मौजूद हैं जो आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं, अमेज़न प्राइम टीवी पे देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज मौजूद हैं। तो इन चीज़ों में हम अपना वक्त गुजार के इस फुर्सत को हम इस सिचुएशन को हम एक फुर्सत में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा घर में रहते हुए भी हम एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग, योगा, ये सब चीज़ें नहायत इम्पोर्टेंट हैं। और इस तरह हम अपने आप को मजबूत भी रख सकते हैं। और ये सब चीज़ें वो हैं कि जो हमारे दीन में हकीकत में
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंश्राइंड कर रखा है। चुनांचे वो मोस्ट डिवोशनल दुआओं में से एक दुआए कुमैल जैसे हम लोग शब जुमा पढ़ते हैं, उसमें भी हिफ्ज़ान सेहत की बात की गई है। वक़व्व अला खिदमतिका जवारिही वश्दुद अला अज़ीमति जवानिही। परवरदिगार तू हमें कुव्वत दे, हमें ताकत दे और हमारे बॉडी ऑर्गन्स को स्ट्रेंथन कर, ताकि हम तेरी और तेरे बंदों की ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस कर सके। तो हिफ्ज़ान सेहत के जो भी उसूल ज़वाबित हैं उन पे अमल करना। पर्सनल बिलीफ्स कुछ भी हो सकता है, बहुत से लोग हो सकता है कि जो इसको एक मीडिया एग्जेजरेटेड इशू मान रहे हो कोरोना वायरस को, या और भी पर्सनल इश्यूज किसी के कुछ भी हो सकते हैं, पर्सनल बिलीव्स। लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन है, जो उसूल ज़वाबित हैं, जो डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स के इंस्ट्रक्शंस है और जो गवर्नमेंट्स के लॉज हैं, वी मस्ट अबाइड बाय देम। और आपका और तमाम डॉक्टर हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो माशाल्लाह से कम्युनिटी में अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं। और ये एक सुन्नत हसना जो आपने शुरू की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको कंटिन्यू रखे। और इस तरह के दूसरे मौक़ों पे भी हम अपने तमाम मुहतरम डॉक्टर हजरात से और ख़वातीन से ये गुजारिश करेंगे कि वो इंशाल्लाह इस तरह से टाइम निकाल के कम्युनिटी को इन्फॉर्म करते रहें और कम्युनिटी की अवेयरनेस में इजाफा करता रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सबके तौफ़ीक़ात में रोज़ रोज़ इजाफा करता है। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। अब एक आखिरी सवाल है। नॉर्मली जो हैंड सैनिटाइजर यूजेज हर एक कर रहा है, इज इट नेसेसरी टू यूज दैट इनसाइड होम एज वेल, जबकि आप वहाँ पर साबुन और पानी का वो दस्तयाब होता है कि do we still, the people still need to use the hand sanitizers inside their homes when they have water and soap available there, or is it just for certain places where you don't have access to water and soap? इस बारे में I think that your word, as almost every participant has said, that washing your hands with warm water and soap, I think is way more effective, because you can wash the virus off this way. Hand sanitizer is only where soap and water is not available. It's true. So I agree with that. Any final message each one wants to give at the end before we conclude this? So I think जब आप yes, आप जो क्वेश्चन, जब आई थिंक हमारी वीडियो डिस्कनेक्ट हो गई थी, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे अबाउट द डेड बॉडी, तो मेरे पास वो, मैंने एक रिकमेंडेशन आपकी एक पीडीएफ फाइल निकाली हुई है, मैं आप लोगों को ईमेल कर दूंगी. इफ यू कैन सेंड मी एन ईमेल एंड देन यू कैन शेयर, यू कैन गो ओवर, आप मौलाना साहब के साथ डिस्कस कर सकते हैं. And if he feels like you are appropriated, then you can, spread that in the community. Definitely. We have a COVID-19, this task force team of these doctors, professionals. That's a white WhatsApp group. We have already that. I don't know if I have added you in there as yet, but I will add you. You can share that there. That would be really appreciable. And if any of the viewers, like we have Hassan Zahir Saab as well here, or anybody else has any question for these team of professionals here, please go ahead if anybody has any particular question which we haven't addressed yet. Riaz, I don't have a question, but I really appreciate the information. Thank you so much. Yeah, I think as Maulana said, we should probably continue with this, whoever has the time. We're all busy. Definitely. I think it's a service to the community. We should continue on a weekly or bi-weekly basis. Definitely. We've been doing it for weekly. We can do it bi-weekly. Depends on the availability and the need, and especially we just value your precious time. And I personally, on my behalf, on behalf of Hussaini Association of Calgary, on behalf of whole community, thank each one of you, Sister Dr. Fauzia Kareemi, Dr. Shabih-ul Hasan Saab, Sister Aliya, and Dr. Maulana Syed Hadi Hasan Saab, and all the viewers who joined us. And I think even though we have a limited number of viewers joined us during this video, but I know the previous videos have been uploaded, and so many people have sent feedback. They really enjoyed that, and they really appreciated the time you guys are putting in with your valued suggestions. Thank you. May Allah Ta'ala bless you all, and really appreciate your time. And inshallah, we get along again. Thank you. Thank you. Thank you so much. Okay, thank you. Thank you.